specifying the number of sheets required for the fabrication of the duct. डक्ट फैब्रिकेशन करने के लिए हमको कितना शीट जरूरत है उतना शीट को हमें बिल ऑफ क्वांटिटी में करता है. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फार्मूलास. आई विल जस्ट टेल यू, यू जस्ट मेक ए नोट ऑफ देम. ओके, नाउ I'll just summarize the formulas here. So if you want to measure rectangular straight duct area, so ये duct बनने के लिए हमको कितना शीट जरूरी है. Suppose if they ask you a question or we need to calculate, तब हमें फार्मूला यूज करता है 2 into width plus height into length. क्या है? 2 into width plus height into length. So suppose it is 1000 mm, height is 750 mm, length is 2500 mm. Then we simplify these values in this so that you will get 87,50,000 square mm. So which is square meter में convert करना है तो 8.75 square meter. Okay. So ये स्क्वायर मीटर को हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है. सो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1 square meter equals to 10.76 square feet is the conversion. Therefore it is 94.15 square feet. So अभी 94.15 square feet आया. अभी उसको number of sheets में convert करना है. How will you convert? So standard area of sheet or standard size of the sheet. Okay, standard area or standard size of the sheet is 8 feet by 4 feet basically. ठीक है, 8 feet by 4 feet. Therefore 96.5 divided by 32, 8 4s are 32, right? So you'll get the number of sheets. It will be around 3 sheets हमको जरूरत हो सकता है उधर. हाई सा हमें पूरा डक्टिंग पे फाइंड आउट करता है. दिस इज फॉर स्ट्राइट डक्ट. सपोज इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर ए स्ट्राइट स्क्वायर देन इट इज 4a, और इसको भी 2 into width plus height into ले सकता है. So same simplification we did and we have calculated how much area is required. Suppose if it is a round, what is the area of a round? So suppose if it is a round, allow me 1 minute, there is some issue with this. Are you able to see the screen, full screen? Are you able to see the full screen? Guys. Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. If I go with the full screen slideshow, are you able to see the slideshow? Are you able to see it? Yes, sir. Right now I am into a rectangular duct. Again, are you able to see this slideshow? Okay. So then if you come to the round, for round duct, the formula is
pi into d into l, pi dl. Okay. So diameter is 1000 and length is 2500. Therefore pi dl, pi का वैल्यू कितना ले सकता है मैं 3.14 into 1000 into 2500, where we get, no sir, not visible. Okay, I'll share the whole screen then. Sorry, I may be in another screen. If you reply on message, I can't. You need to I'll share entire screen. Now, is it visible now? I hope round duct is visible now, yes. Right? Yeah. So pi dl. So pi dl is the formula for surface area. So कभी कभी ये surface area का मैं development area भी बोलता है. We call it as a development area also. Okay. So first now. So 3.14 into 1000 into 2500, which is 7,85,000. Sorry, 78,52,500 square mm होगा. उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया तो 7.85 स्क्वायर मीटर होता है. So when you convert it into the square feet, so 7.85 into 10.76, which is 84.49 square feet. Okay. So like that we have formulas for each and every fitting. We have formula for shoe collar or reducer. So reducer ka formula is surface area of a reducer is 2 into width plus height into length में. So 2 into width plus height into length में हमें क्या किया इधर? So height का height average लिया, width का width average लिया. So width 1 plus width 2 by 2 దొరికిందా? Width 1 plus width 2 by 2, height 1 plus height 2 by 2. See, that is what we did. Width 1 plus width 2 by 2, height 1 plus height 2 by 2 into length. That's it. We have taking the average of both values. Okay. Therefore, after summarizing this value, simplifying this values, you will get as a 86.08 square feet. Okay. Now, I'll come back. First, make a note of this. Make a note of this fast. Done? Is it done? Guys, you are there? No, sir, wait 1 minute. Yeah.
Done. Guys, done.
Guys, there. Sorry, you need to speak out. I can't see your screen. You need to understand that. Allow me 1 second. Do something. Yes, is done right? Next. Hope it is done right. Now, so this is for square. So I'll give formula. Square ka formula is 4 into width 1 plus width 2 by 2 into L.
Okay, find out the value. Find out the value and tell me. Find out the value. Anyone? How much? Let's see once. 134.5 square feet. So for round pi d L. Pi d L में diameter 1 plus diameter 2 by 2. Same. Diameter 1 plus diameter 2 by 2. It will be around 76.04 square feet. Okay. Next, for elbow. Okay, for elbow. So in the previous, how we taken the average of height and width. Here we are taking the average of length. Okay, 2 into width plus height into length में length का average लेता है. Length L1 plus L2 by 2. Here length 1 is arc length, bigger arc plus smaller arc divided by 2. Arc length measure करना है, उसका radius लेना है, like this here. ठीक है. So see here formula is 2 into width plus height into arc 1 inner arc length plus outer arc length divided by 2. So just we are doing
the length and we are finding the values here. Okay, take a note fast. Next, for round also we are taking 4a into inner arc plus outer arc. Just you can make a note of formulas from here. Okay, you can just make a note of formulas. Round ka. Here we are taking length again. Length pi dl, where L is L1 plus L2 by 2. Next. So oval arc, I'll give you the sheet for this. I'll give you the separate sheet for this. Now, so for this drawing, if you take this drawing, for this drawing, we need to calculate. Okay, we need to calculate total number of sheets. So to calculate the number of sheets for this drawing, so what we need to do is, first we need to identify what are the elements present in this. Okay, to find out the elements present in this, so what we are going to do is, we are going to elaborate this. Okay, see, we have separately divided into sections first. So section 1, section 2, section 3, and we'll define what section is what. Okay, so how we are going to take these sections in calculating the number of sheets. So see here, section 1, section 2 is a reducer, section 3 is a trouser, section 4 is a trouser elbow. Like that we have
divided this. Okay. So first you draw this drawing. So first you draw this drawing, complete drawing. Then we'll come back for section 1, section 2. Okay, we'll take it a note. Okay. Please let me know once the drawing is completed. Dana? Is it done?
Yes. So now let's mention the nomenclature of this. So you mention this nomenclature now. Section 1 क्या है, section 2 क्या है, section 3 क्या है, section 4 क्या है. Is it done? Yes. अपना क्लास प्रोफेशनल के लिए उनका तो. Okay, now let's see how we work on an Excel sheet. I want everyone to work on this Excel today. Okay. Section
Allow me 1 minute, sir. Bari. Item name. Just 1 minute. Okay. Now what we are doing is, array. Item name, or you can mention it as a duck shape. Duck shape. So we'll take width 1, width 2, okay, width 2, and average. Directly I'm taking as a average. Width equals to width 1 plus width 1 plus width 2 divided by 2. This is the average I'm taking. Okay, this is the average I'm taking. Okay, width 1 plus width 2 by 2. This is, so directly I'll take width equals to width 1 plus width 2 by 2. Next, same with respect to height. H1
H2 H equals to H1 plus H2 by 2. Okay, next H equals to H1 plus H2 by 2. L1 L2 L equals to L1 plus L2 by 2. Therefore, area. What is the area formula? Area equals to A. A equals to width into 2. 2 into width plus height into length. Width plus height into length. So now this is the formula we have, right? Okay. Section my serial number, not section, will take serial number. Okay, serial number 1. What is the serial number 1 in your drawing? For drawing पे serial number 1 क्या है? You need to speak out, guys. Am I on mute? Straight duct. It's a straight duct, right? Yes. It's a straight duct. As it is a straight duct, what is the width one we have? 1600. Okay. Width 2, 1000. Sorry. Width 2 also you need to take 1600. As it is a straight duct, मैं straight duct का average ले रहा हूं, ठीक है? So why सर straight duct का सीधा formula यूज कर सकता है ना? So फिर भी मैं average लेता हूं. Average लिया तो straight duct का width 1 width 2 क्या होगा? That equals to this, bracket open करो, this plus this divided by 2. ऐसा भी दे सकता है. नेक्स्ट हाइट कितना है? 1000. So you can go with the formula of average, that equals to average AVG AV average of ये दोनों ले सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट L लेंथ कितना है सर? 2175, राइट? 2175. तो 2175 मैं क्या कर रहा हूं? इसका एवरेज ले रहा हूं. दैट इक्वल्स टू AVE एवरेज ऑफ, एवरेज सेलेक्ट करो, ये दोनों सेलेक्ट करो, उसका एवरेज आ गया ना पूरा, ठीक है? So now I'll insert the formula, that equals to 2 into ब्रैकेट ओपन करो, विड्थ वैल्यू कहां पर है? ये काम करो, आपको इजी करना. 2 into विड्थ कहां पर है? इधर है. विड्थ प्लस हाइट, इधर हाइट है, इंटू अगेन इंटू लेंथ. लेंथ कहां पर है? इधर आना है ना. सो लेंथ इज M5 दे दो. दिस इज द वैल्यू you'll get. ओके, दिस इज इन स्क्वायर. कैसा ही है? दिस इज इन स्क्वायर mm. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं देखो, इधर फॉर्मूला में क्या कर रहा हूं देखो, फिर से एक ब्रैकेट ओपन किया मैं, डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय
स्क्वायर मीटर में करना है तो कैसा करना है, 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000 नहीं है ना, 1 मीटर में कितना mm है, 1 मीटर में कितना mm है, 1000 mm. 1000 स्क्वायर mm चाहिए तो 1000 इंटू 1000 होगा. So you'll get square meter. This is in square meter now. Now again I am converting. See, again I am converting into, again एक bracket open किया, again I am converting into feet. 1 square meter equals to कितना feet बोला मैं, कितना square feet बोला है, 10.76 बोला है ना, 10.76 into 10.76 किस में कन्वर्ट हो गया, ये स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया. दिस इज इन स्क्वायर फीट. नाउ स्क्वायर फीट, गॉट इट. नाउ सेक्शन 2, सेक्शन 2 में क्या है अगेन आपको, सेक्शन 2 क्या है पता ना है जल्दी. Trouser. ट्राउजर, ट्राउजर है, ट्राउजर स्ट्रेट है, वो ट्राउजर का स्ट्रेट, राइट, इट्स ए ट्राउजर स्ट्रेट. उसका लेंथ हमें ले रहा है, ट्राउजर का स्ट्रेट लेंथ ले रहे हैं मैं, विड्थ इज 1150 है, 1150 विड्थ. ओके, अगेन विड्थ 1 भी 1150, विड्थ एवरेज ले रहा हूं मैं, इसको डबल क्लिक किया तो वो आ जाएगा. अभी हाइट कितना है उसका, सिर्फ वो ट्राउजर का हाइट देखो, सिर्फ वो ट्राउजर का हाइट देखा है तो आप 450, सॉरी, वो ट्राउजर का हाइट देखा है तो सेम एज हाइट ऑफ द डक्ट, हाइट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ विड्थ का ही 2 सेक्शंस में हुआ, D1 D2 हुआ. सो हाइट विल बी द सेम, 1000 1000. नेक्स्ट एवरेज ले तो ये ऐसा डबल क्लिक करना है. लेंथ, लेंथ कितना है, 770 दिया है, देखा है, दिख रहा है आपको 770 ड्राइंग पे, लेंथ 770 दिया है ना, 770 ले लो. सो इसका फार्मूला इधर डबल क्लिक किया तो वो फार्मूला भी कॉपी हो जाएगा. जस्ट यू डिक्रीज द वैल्यूज, 2 वैल्यूज करो पॉइंट के बाद. नेक्स्ट सेक्शन 3, 3 का क्या है सर, व्हाट इज 3, reducer, right? Reducer. So reducer, so एक तरफ वो reducer का है 1600, और reducer है 1600 से कितना को हो रहा है, 1100 को हो रहा है, 1600 से 1100 को हो रहा है. ओके, इट इज reducing from 1600 to 1100. दिस इज एक तरफ 1600 है, width to 1100 है. Is height also reducing? Yes. So this will be the value. Okay. Now ये देखो, अब दिख रहा है, इधर ड्राइंग दिख रहा है, ये देखो, ये 1150 है, 1600 नहीं, ये पूरा 1150 है. सो ये 1150 होना है, ठीक है. नाउ ये रिड्यूस हो रहा है, इस तरफ कितना है, 1100 लिया है, ठीक है, इसका एवरेज मैं ले लिया. और हाइट, हाइट कितना है, इधर 1000 है हाइट, सो 1000 ले लो सीधा, ठीक है. नेक्स्ट H2, H2 कितना है, 800 है इधर, ये 800 ले लो, इसका एवरेज आ गया. और लेंथ, लेंथ कितना है, 300, सो दोनों तरफ 300 ही दे दो.
if error comma 0. एक काम करो, equals to this plus this divided by 2. That equals to this plus this divided by 2. ओके, सेक्शन रेड्यूसर हो गया। नेक्स्ट क्या है रेड्यूसर के बाद? सेक्शन 4 में क्या है? व्हाट इज सेक्शन 4? वी हैव section 4 is elbow, right? Trouser elbow, this elbow, here elbow, so we'll type elbow. तो elbow का width है 450, ये भी 450 है, ठीक है। देखो इधर भी 450 है, इधर भी 450 है। हाइट सेम होता है सर, हाइट आल्सो वी आर टेकिंग 1000, हाइट इज 1000 and 1000। नेक्स्ट लेंथ 390, इधर दिया है देखो 390, एक तरफ 1100 आ गया, उसका वैल्यू भी आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज रेड्यूसर। रेड्यूसर 390 विड्थ 1, विड्थ 2 इज 600। देखो ये 600 कहां से मिला? ये 390 है, और इधर विड्थ कितना है? इधर 600 दिया है ना, ये 600 लिया मैं। हाइट कहां से आ रहा है? 1000 से 500 को हो रहा है। दिस हाइट इज 1000 and this height is 500 and this value we have taken। length 1, so 300 same। if length दो लेंथ नहीं होता, एक ही लेंथ तो दो बार देना है बस, तो उसका वैल्यू भी आ गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 6, सेक्शन 6 600 विड्थ कितना है? 500। हाइट कितना है? विड्थ लेंथ कितना है? 2445 बस खत्म। सेक्शन 6 भी हो गया। सेक्शन 7 अगेन, सेक्शन 7 इज इधर एक चीज आपको ध्यान, दिस लाइन, ये लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज नॉट विजिबल, दिस इज सेक्शन 7 एंड कैप। एंड कैप में सो एंड कैप का विड्थ होता है 600, हाइट होता है सेम 500। तो एंड कैप का फॉर्मूला क्या होता है कि इधर लेंथ नहीं होता है सर, लेंथ इज ऑलवेज 0 एंड कैप का, ओके। कभी कभी होता है 50 mm होता है, 50 mm एंड कैप का लेंथ होता है, ओके। बट 50 mm एंड कैप का लेंथ होता है तभी ये फॉर्मूला नहीं एंड कैप का, ओके। सो कभी कभी ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 है ना, बट दिस इज रॉन्ग। एक ऐसा है, ये पूरा निकाल दो, ये पूरा फॉर्मूला में अब क्या करना है, दैट इक्वल्स टू विड्थ
into height. Rectangle width into height is the formula handicap ka. Width into height. This is the value. ठीक है. In this case only, handicap का case only width into height लेता है. Okay. In the case of handicap, the formula is width into height. इसलिए हमें handicaps लास्ट में डालना पड़ेगा, तब आपको इजी हो जाएगा. ठीक है. So did you get how we are working for this? So will you complete by tomorrow this section? Okay. Yes, sir. So इसका values आपको मैं ये सेक्शन के ऊपर काम करो. Okay, I'll be explaining you this section. This section has to be worked out. It is very clear. Everyone should work. Next, duct sheet metal gauges. Duct sheet metal gauges means it defines the thickness of the sheet. Okay, वो sheet thickness को define करता है. Okay, so this defines the thickness of the sheet. So here, how it is defined? How the thickness of the sheets are defined? The thickness of the sheets are defined with respect to gauge number. Okay, so here the gauge number, if the thickness, the width of the duct is up to 450 mm, that means up to 18 inch, then we use gauge number 26. The thickness of the sheet will be 0.5 mm. So here width defines the gauge number. If width is up to 18 inch, gauge 26. If it is 18 to 30 inch, gauge 24. If it is 30 to 60 inch, gauge 22. If it is 60 to 90 inch, okay, gauge 20. 90 and above, 18 gauge. 18 gauge का thickness 1.20 mm होता है. 16 gauge का thickness 1.40 mm होता है. ठीक है. So make a note of this table. ये table important है. So अभी मैं width देखता हूं. So 1600 कहां पर है? इधर आप गेज नंबर लिखना पड़ेगा. गेज नंबर. ओके, सो गेज नंबर. सो 1600 है. 1600 होता है तो 1600 इधर देखो 1500 to 2. सो गेज नंबर 20 लेना पड़ेगा. सो हियर विल राइट G20. ठीक है, ऐसा हमें गेज नंबर को भी लिखना पड़ेगा इधर. मेक ए नोट ऑफ दिस टेबल.
Is it done? Guys, is it done? Okay. So I am left with two concepts. One is hydronic system, which is piping and pipe sizing or pump head calculations, and ventilation system. Okay. So these systems, can someone open this link who is having AutoCAD in your laptop? Can someone open this link? Who is opening this link? If you tell your name, I'll give the access for the screen. I just given link, sir, in the chat. Check it. Who is going to open this link? Arun, are you there? Arun. Yes. Open that link and share me your screen. I'm giving access to you. I have given access. Share your screen. Yes. Open that link. Yeah. Come to drawings. Drawings. Click on drawings. First project practice. Click on commercial G+2 typical DWG. Not. Mini commercial G+5 different. That also okay. Click there. Download. Save. Open it. Open it. Open the AutoCAD. Oh, it is opening. Wait. Open the drawing.
Come to desktop and open it. Yeah, this is the drawing. Come to floor 1, first floor. Use P enter. Yeah, zoom it. Not first, that floor, that one only. Zoom that. Anything, any floor. So wait. It is having 4 different floors. Okay, it is having 4 different floors with same layout. It is having 4 floors with same layout. Okay, zoom any one floor. Just scroll it. You don't have a scroll button. Just keep on the laptop. Do like this so that you can zoom it. Use your 2 fingers. Ah, yes. Make it small. Make it small, little small. So in this you have room 1, room 2, room 3, room 4, room 5. In this little zoom it near the mouse, little zoom. Okay, room 6 is non-AC and remaining rooms you need to make it as air conditioned. Okay, room 6 is non-AC and remaining rooms you need to make it as a air conditioned. Okay, so to make it as a air conditioned, what you need to do is you need to do the calculations first. First ground floor, first floor, second floor, third floor, like that हमें calculations करना पड़ेगा. So to do the calculations, okay, to do the calculations हमें क्या करना है कि, okay, so you need location, right? So take location Mumbai, everyone. Okay, take location as a Mumbai. Okay, next one. So for remaining all properties, you come down, take the drawing to the top. There red color text is there. You zoom it. There you have all the properties. So how many people, how will you take? You will take people with respect to, okay, you take people with respect to the shades available there. And here you need to take electrical equipment as 1.25 watt per square feet, glass height as 4 feet, okay, glass height, and width of the glass you need to, width of the glass हमें आप क्या करना पड़ेगा, width of the glass you need to measure the width, and height, okay, height as they have given already.
height they have given, you need to measure the width. Okay, and the next, fall ceiling height 9. So by using these factors you do the load calculations. अब पूछ सकता है u factors आप g plus 2 में क्या लिया है. ओके, g plus 2 में क्या है u factors, वही u factors आप कंसिडर करो. ओके, u factors you take, g plus 2 में क्या है वही कंसिडर करो. डेल्टा टी यू नीड टू कैलकुलेट विथ रेस्पेक्ट टू, डेल्टा टी आप कैसे कैलकुलेट करता है, यू विल कैलकुलेट विथ रेस्पेक्ट टू द लोकेशन. क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? सो मुझे एक्सेल शीट में लोड कैलकुलेशंस करना है. एनी क्वेश्चंस हियर? सर ग्लास का एक बार बता दीजिए. ग्लास का ड्राइंग पे विड्थ मेजर करो. एक बार ड्राइंग पे आ जाओ अरुण. सर लोकेशन मुंबई. लोकेशन मुंबई. सो उधर एक विंडो में रेड कलर ग्लास है, देखो वॉल पे आ जाओ. वॉल पे कम नियर टू वॉल एंड जूम इट. उधर वो वॉल का लेंथ मेजर करो. वॉल कहां पर है अरुण? लास्ट पे देखो वॉल. वॉल पे विंडो होता है ना, विंडो का लेंथ मेजर करो. ओके, एंड हाइट 4 फीट ले लो. गॉट इट? ओके सर. So any doubts, anyone? Am I clear? Hope I am clear. Okay, so we'll meet on Thursday. By Thursday everyone should complete the load calculations. Hope it is clear to everyone. Okay. Okay, thank you.